Now let us talk about periodicity in properties. Periodicity in property माने कौन? आम जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल रे एलिमेंट्स को तांकर एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज अरेंज करके रखुचे, द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स आर फाउंड टू ऑब्जर्व अ सर्टेन पैटर्न. तो पैटर्न माने कौन? केते गुडे एलिमेंट थिबो जहार प्रॉपर्टी सिमिलर तुमको देखा जिवो, कि केते गुडे एलिमेंट रे गोटे प्रॉपर्टी रो वैल्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीज करिवो कि कंसिस्टेंटली डिक्रीज करिवो. तो ये प्रॉपर्टी गुड़ाक आम किसी पैटर्न्स ऑब्जर्व करि पारुछे. तो दोज पैटर्न्स आर रेफर टू एज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. तो यहाँ को आम एमती डिस्क्राइब करवा. देख जो टेक्स्ट लिखा है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड शो अ रेगुलर ग्रेडेशन ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. माने तुम जदि गोटे पीरियड रे लेफ्ट टू राइट को जीवो, गोटे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी रो चेंज टा गोटे पैटर्न रे ऑब्जर्व करिवो, आइदर इंक्रीज होउथबो नले डिक्रीज हेउथबो. सेमति जदि गोटे ग्रुप रे तुमे टॉप रु बॉटम को जीवो, ऊपर तळ को जीवो, ताले भी सेमति प्रॉपर्टी गुडाको गोटे रेगुलर पैटर्न रे चेंज होउथबो, आइदर इंक्रीज करिवो और डिक्रीज करिवो. तो एई भलिया जो प्रॉपर्टी गुडाको गोटे रेगुलर पैटर्न रे पीरियड रे लेफ्ट टू राइट गले कि गोटे ग्रुप रे ऊपर तल को गले चेंज हुए, से गुड़ा को हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोली कहूचु. तो व्हिच पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस एई चैप्टर रे हमें जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी सब कथा हबा ता भितरे ए गुड़ा को इंपोर्टेंट. ऑक्सीडेशन नंबर, शील्डिंग इफेक्ट विषय हमें परे बुझिबा, बट वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो दीज आर सम ऑफ द इंपोर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो विषय में डिस्कशन करिबा. तो ए वीडियो रे वी विल फोकस ऑन द फर्स्ट वन व्हिच इज एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियाई. सो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस देन? नाउ एटॉमिक रेडियस रो ना रो जणा पड़छि, इट इज द रेडियस ऑफ एन एटम. बट द प्रॉब्लम इज सपोज हम गोटे एटम नेचे, एटा तार न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस चारिपटे हम डिफरेंट शेल्स कंसीडर करछे फॉर द इलेक्ट्रॉन. तो ए जो शेल सब कंसीडर करछो, ईच शेल हैज अ नंबर स्टार्टिंग विथ 1. तो एमती एन टा 1 2 3 4 हेकी से तो जाउची अप टू इन्फिनिटी. तो ता माने कोन? गोटे एटम रो आउटर बाउंड्री किछि नाही. देयर इज नो आउटर बाउंड्री ऑफ एन एटम. सो इफ वी टेक एन आइसोलेटेड एटम, तो तार जो रेडियस कि तार साइज ताकू तमे डिफाइन करि परिबो नाही. इट कैन नॉट बी डिफाइंड बिकॉज यू डोंट नो वेयर द एटम एंड्स. The shells will theoretically exist up to infinity. ताले सेति पई एटम रो रेडियस टा केमती बाहरिबो? तो सेटा बाहर करबा पई हमको गोटे रेफरेंस डिस्टेंस कि गोटे रेफरेंस लेंथ दरकार, जहा रेफरेंस रे हम कैलकुलेशन करि परिबा. सो व्हाट काइंड ऑफ रेफरेंस आर यू यूजिंग, ताकू नै कि हमर डिफरेंट टाइप रो एटॉमिक रेडियस बाहरे. वन काइंड ऑफ रेडियस इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस, अनदर काइंड इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस, अनदर इज कॉल्ड आयनिक रेडियस, वैन वाल्स रेडियस. तो ये भाया डिफरेंट टाइप रो रेडियस सब अच्छी. सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन ये जो रेडियस गुड़ा कौन कौन. तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कोवेलेंट रेडियस. नाउ कोवेलेंट रेडियस पई यू विल टेक अ x2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. x2 माने कौन? गोटे मॉलिक्यूल नैचे जो कि दीटा x रो एटम रही. सो द टू एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर. और तांको भितर जो बॉन्ड अच्छी, इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड विषय तुम आगुरी आइडिया अच्छी. नाउ व्हेन यू टेक सच अ मॉलिक्यूल, ईच एटम रो जो न्यूक्लियस थिबो ता भितर गोटे सर्टेन फिक्स्ड डिस्टेंस मेंटेन हुए व्हिच इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. तो लेट अस से द बॉन्ड लेंथ इज L. तो बिकॉज इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड तुम एटा को कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ बोली भी कहि परिबो. नाउ द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम, R कोवेलेंट, is defined as this bond length by 2. तो if you take a x2 type of molecule, सही molecule रे दीटा atom भितरे जेतिकी distance अच्छी, rather दीटा जगह atom रो nucleus भितरे जेतिकी distance अच्छी, which is called the bond length, तारो half है जीवो से atom रा atomic radius. और सेटा हमें जेतु covalent bond रो reference रे बाहर कले ताको हमें कहिबा covalent radius. तो से भलिया What is a metallic radius then?
तो मेटालिक रेडियस को बुझिबा पई we have to take a metallic crystal. Now in a metallic crystal you have atoms of the metal arranged in a certain fixed manner. So let's say this is the arrangement of atoms inside the crystal. तो एठी तमे दीटा atom को pick करो which are closest to each other or nearest to each other. So let's say these two atoms are closest. ताठू आउ कम distance रे आमे atom पाउने. Say this distance between the two atoms is L. Now since there is no covalent bond between the metal atoms, एटा को हमें covalent bond बोली कहिबानी कि जो L टा को लिखिचे सेही L टा को covalent bond length बोली कहा जिवनी. This is known as a metallic bond length. So now R metallic, the metallic radius of that particular atom, जो metal atom हमें नहींचे, R metallic would be equal to this L by 2. तो तमे जदि covalent bond रो half करूचो, that gives you a covalent radius. और जदि metallic atom भितरे distance रो half कलो within a metallic lattice or within a metallic crystal, ताले सेटा को हमें metallic radius बोली कहिबा. Let us now understand what is a ionic radius. तो ionic radius पई हमर reference material हबो गोटे ionic crystal. तो ionic crystal रे you have cation and anion. तो सेठी कौन हुए गोटे कैटायन को सराउंड करके you will have certain number of anions. सेमती every anion is surrounded by certain number of cations. और ए जो अरेंजमेंट टा रिपीट हे चलिबो. तो this plus has different anions around it. This anion has different cations around it. तो ए भलिया अरेंजमेंट टा कंटिन्यू कला. So here if we take the distance between two neighboring ions, जोटा कि तांकर minimum distance. Suppose गोटे cation और anion यांका भितर let's say this is anion, this is cation, तो तार center to center गोटे distance अछि which is the minimum distance observed. ताले ए distance टाको suppose मु लिखिली L1. सेमती you can take another distance, let's say the distance between two nearest anions. So let us say this distance is L2. So अबे एठी हमें कैलकुलेशन टा केमती करिबा देखो. हमरो जोटा anion to anion distance अच्छी L2, that will be written as 2 times radius of anion. तो radius of anion को मु R minus लिखिची, and the distance between anion to cation which is L1 ताको मु लिखिबी radius of cation plus radius of anion, R plus plus R minus. So if we can determine L1 L2 ए थ्रू solve करकी आमे R plus केते R minus केते तार values को determine कर परिबा. So if you solve this equation तमे देखि परछो R minus हला L2 divided by 2. एबे R minus रो ए value टा एठी यूज कले L2 by 2, R plus तमे पाइ जबो L1 minus L2 by 2. So by taking the distance between ions as the reference distance, आमे ए थ्रू ए जो रेडियस उडा को बाहर कले, those are referred to as ionic radius. तो जे कोनसे गोटे ionic crystal को बेस करके तमे ए कैलकुलेशन टा कर देई पारिबो. सो एठी जो डिस्कशन गुडा कले आमे रेडियस डिटरमिन करिबा पई आइदर कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ को रेफरेंस नेले और मेटालिक बॉन्ड लेंथ को रेफरेंस नेले और आयनिक बॉन्ड भितर डिस्टेंस कि आयन आयन भितर डिस्टेंस ताकू रेफरेंस करके नेले. बट एमती भी केते एलिमेंट अछि, लेट्स से नोबल गैसेस, दे डोंट फॉर्म एनी काइंड ऑफ बॉन्ड. से माने कोवैलेंट बॉन्ड करिवेनी, आयनिक बॉन्ड करिवेनी, दे डोंट हैव अ मेटालिक क्रिस्टल. तो तामाने सेही भलिया गैस पई फॉर नोबल गैसेस स्पेसिफिकली आमे कोवैलेंट की मेटालिक की आयनिक ए सब रेडियस डिटरमिन करि परिबानी. तो सेही सब केस रे तमे तांकर वैन डर वाल्स रेडियस टा कैलकुलेट करिवो. So remember that van der Waals radii represents atomic radius of noble gases. So what are the noble gases? We have helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. So these are our noble gases. ଆଉ ଏଇ noble gas ଗୁଡାକ ଅନ୍ୟ element ସହିତ covalent କି ionic କୌଣସି type ର bond form କରୁନାହାନ୍ତି. So that is why we can determine only van der Waals radius for them. So what is van der Waals radius? Now, if you consider these gases in a solid state, माने गैस गुडा को तुम कंप्रेस करके जदि सॉलिड बनै देलो, से सॉलिड स्टेट रे भी तांकर किछि बॉन्ड नथिबो,
But since all the atoms are squeezed into a small space, the atoms would have certain packed arrangement. तो solid state रे धर atom गुड़ाक ए भलिया arrange हेकी रही. तो यही arrangement रे दीटा atom रो जोटा minimum distance, shortest distance between two atoms, let that distance be L. तो वर्तमान जदि यही L रो by 2 करिवो, that will be referred to as van der Waals radius of these atoms. तो van der Waals radius टा कौन? It is half of the shortest distance between two atoms when the noble gases are kept in solid state. But यार exact calculation केमती हुए से विषय रे तुम्हें आउ गोटे चैप्टर अच्छी gaseous state से चैप्टर रे यार डिटेल टा सिखिबो. For the time being एतिकी मन रख जे noble gases पई तमे van der Waals radius calculate करूछो. For other elements you can determine covalent, metallic or ionic radius depending on which element you are dealing with. तो ये गोटे जिनस जानी था जे डिफरेंट एटम पई जो डिफरेंट टाइप रो रेडियस हमें कैलकुलेट करूचे ता भितरे van der Waals radius रो न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज मच ग्रेटर दैन अदर काइंड्स ऑफ रेडियस. या माने कोन तमे गोटे एलिमेंट रो धर कोवैलेंट की मेटालिक रेडियस बाहर करछो तापर हमें नियॉन पई गोटे van der Waals radius बाहर कले. Now the covalent or ionic radius of the other elements तांकर वैल्यू जो ऑर्डर रो थाए नोबल गैसेस रो जो van der Waals radius टा बाहरे तार वैल्यू बहुत हाई थाए. जेहेतु एठी नोबल गैस रो एटम भितर एक्चुअली किछि बॉन्ड नाही सो दे एक्चुअली मेंटेन अ बिग डिस्टेंस बिटवीन देम. तो तांकर जो डिस्टेंस टा इवन इन सॉलिड स्टेट द डिस्टेंस इज क्वाइट हाई. तो बिकॉज ऑफ सच अ हाई डिस्टेंस ताकू तमे तले बाय 2 करूचो रेडियस रो वैल्यू टा भी हाई रहूची. तो रिमेंबर दिस एज अ फैक्ट दैट van der Waals radius is much bigger than other kinds of atomic radius. So let us now talk about how this atomic radius or atomic radius ru तमे atom रा size विषय रे आइडिया करि परछो. So how atomic size or atomic radius varies in the periodic table. तो तार दीटा प्रिंसिपल हमें फॉलो करिबा. In a given period atomic radius generally decreases from left to right. तमे जतले लेफ्ट टू राइट को जाउचो atomic radius रो वैल्यू डिक्रीज करी करी जिवो. As you can see in this table जे lithium, beryllium, boron, carbon एवडा को सब अछि हमर सेकंड पीरियड रे. All these elements are present in period number 2. तो सेकंड पीरियड रे तमे जतले लेफ्ट टू राइट को जाउचो नोटिस दैट ए जो रेडियस रो वैल्यू दिया हेची ए वैल्यू गुडा को भी डिक्रीज करी करी जाउची. एठी ऑलमोस्ट सेम अछि बट डिक्रीज होउची स्टिल. सो अप टू फ्लोरीन दैट डिक्रीजिंग पैटर्न इज कंसिस्टेंट. लेफ्ट टू राइट को गले एटम रो रेडियस टा डिक्रीज करी करी जाउची. सो व्हाई देयर इज सच अ डिक्रीज फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दैट. तो जो डिक्रीज काहे की होउची जेहेतु ए सब जाक एलिमेंट गोटे पीरियड रे अछि स्पेसिफिकली एठी पीरियड नंबर 2 रे अछि ए समस्तंकर वैलेंस शेल हे गला शेल नंबर 2. तो वैलेंस शेल टा सेम रहिला बट न्यूक्लियस रो चार्ज टा इंक्रीज करूची. as you move from left to right atomic number is increasing so the nuclear charge increases. तो मोर आउटर शेल टा सेया अछि बट जो न्यूक्लियस रो चार्ज टा बड़ी चलची. हेले कोन हबो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो थिबे ड्यू टू अ हायर पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस these electrons should be drawn closer to the nucleus. टाणी हि जिबे न्यूक्लियस आडको. हेले कोन हबो जो शेल टा टिके न्यूक्लियस पाखो को आसीबो. तो if the shell becomes closer to the nucleus ताले effective radius of the atom सेटा भी डिक्रीज करी गला. तेनो एठी डिक्रीज रो रीजन हला with the same valence shell since nuclear charge increases from left to right the outermost shell or outermost electrons are attracted more towards the nucleus and therefore the atomic radius decreases. But now in the same period if you look at the last element which is neon it has a much bigger atomic radius. In fact this atomic radius as you can see is even bigger than lithium. 1.23 achi lithium, neon ra achi 1.6. Now why it is so? Because neon is a noble gas ଆଉ ତମେ ତାର जो atomic radius ଟା କାढिଛ that is a van der Waals radius. and ଆମେ କଥା ହେଲେ van der Waals radius ର value ଟା
is much bigger than other kinds of radius. Now that doesn't mean कि neon atom टा बड़ा हो गला, because we have a different way of measuring this radius, से थ्रू तार वैल्यू टा अधिक आसुची. तो सेथिपाई ए जो पीरियडिक ट्रेंड टाको आमे देखुचे जे डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सेई ट्रेंड रे आमे नोबेल गैस को इंक्लूड करिबानी. देयर रेडियस विल बी ऑलवेज बिगर. तो नोबेल गैस को छाड़ी देकी बाकी एलिमेंट पाई आमे एई पैटर्न टा देखि परिबा. सिमिलरली इफ यू गो इन अ ग्रुप, धर गोटे ग्रुप रे तमे ऊपर तळकु जाउछ, सेठी तमरा एटॉमिक रेडियस विल जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ऊपर तळकु गले एटॉमिक रेडियस रा वैल्यूटा इंक्रीज करूची. ना व्हाई इंक्रीज करूची, काहे कि इंक्रीज करिवो? बिकॉज व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सेठी तमे पीरियड नंबर टा बढ़ई बढ़ई जाउछ. सपोज दिस इज वन ग्रुप. इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन पीरियड नंबर 2, ता तलटा हला पीरियड नंबर 3, ता तलटा हला पीरियड नंबर 4. तो जेते तळकु जाउछ पीरियड नंबर टा इंक्रीज करी करी जाउची. एज द पीरियड नंबर इंक्रीजेस, द वैलेंस शेल आल्सो इंक्रीजेस. तामाने एठी जो एटम थिबो तार वैलेंस शेल हला शेल नंबर 2. एठी जो एटम अछि तार वैलेंस शेल होची थर्ड शेल. तो इफ एन एटम हैज outermost electrons in the second shell, suppose एटा फर्स्ट शेल एटा सेकंड शेल, आ गोटे एटम रे outermost electron थर्ड शेल रे अछि, तो थर्ड शेल इज क्लियरली अवे फ्रॉम द सेकंड शेल. ताले सेकंड माने फर्स्ट एटम रो एटॉमिक रेडियस तमे जहा पाइथिलो ता तळ एटम रो एटॉमिक रेडियस ता सर्टेनली अधिका ही आसीबो. तो as new shells are being added, as you go from top to bottom, the atomic radius also keeps increasing. So this is true for all groups. तेनो एठी हमें देखि परछे जेमति एठी ग्रुप 1 को एग्जांपल हिसाब रे नैचे. ऑल दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 1. तो ग्रुप 1 रे तमरा अछि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. लिथियम इज द फर्स्ट एलिमेंट एट द टॉप. लिथियम इज हियर एंड सीजियम इज एट द बॉटम. तो तमे जेतले लिथियम रो सीजियम आड़ को गलो, एटम रो रेडियस टा बढ़ी बढ़ी जाउची. सो सीजियम हैज द हाईएस्ट आर. सीजियम ऊपर को रहबा रुबिडियम, सॉरी सीजियम तळु को रहबा रुबिडियम रेडियस रो वैल्यू रे. ताठु टिके लेस हबो पोटेशियम, ताठु टिके लेस हबो सोडियम, ताठु टिके लेस हबो लिथियम. तो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ ट्रेंड इन एनी अदर ग्रुप आल्सो. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अ फ्यू मोर फैक्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक रेडियस. एबे देखो आमे धर गोटे एटम नैचे सोडियम. ना सोडियम रा आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन तमे देखिबो, इट इज 3s1. नाउ इफ यू टेक अ Na+ आयन, Na+ रा आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन रहइबो 2p6. ए जो 3s1 रो इलेक्ट्रॉन टा बाहर जिवो, सोडियम गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस कले Na+ हबो, तो दैट इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट आउट ऑफ 3s1. तो तार एंड कॉन्फ़िगरेशन हला p6. ताल देखो जदि सोडियम रे 3s1 कॉन्फ़िगरेशन एंडिंग अछि, सोडियम रो वैलेंस शेल होची शेल नंबर 3, whereas Na+ रे वैलेंस शेल हेगला शेल नंबर 2. ताले जदि गोटे एटम रे तमे गोटे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देलो आ गोटे शेल कमी गला, तो ताले एटम रो साइज टा भी जणा पड़ुची क्लियरली एटा डिक्रीज करी गला. मीनिंग आई कैन से रेडियस ऑफ Na+ would be clearly less than the radius of Na. तो ये जो पैटर्न टा देखुछ याको हमें जनरलाइज करि परिबा. अ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द कॉरेस्पोंडिंग एटम. तमे गोटे एटम को जेतेबेले कैटायन को कन्वर्ट कलो बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, यू इम्पार्ट अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम सो दैट इट बिकम्स अ कैटायन. तार एटॉमिक रेडियस टा सब बेले डिक्रीज कर जिवो. लाइक इन केस ऑफ Fe, रेडियस ऑफ Fe इज 1.26. जदि सेटा Fe2+ कर दउछ, व्हिच इज फेरस आयन, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ताले तार रेडियस हो जाउची 0.76. जदि एथुरो आ गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Fe3+ आनिलो, रेडियस फर्दर डिक्रीजेस टू 0.64. तामाने तमे जेते इलेक्ट्रॉन गोटे एटम रो रिमूव करी करी जिवो, तार रेडियस टा डिक्रीज करी करी जिवो. सेमति जदि उल्टा तमे गोटे एटम रे इलेक्ट्रॉन ऐड करकी सेथुरु तमे आनायन बनौछ. नाउ दैट आनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द कॉरेस्पोंडिंग एटम. जेमति फॉर एग्जांपल आयोडीन रो एटॉमिक रेडियस हला 1.23, whereas ionic radius of I- जदि बाहर करिबा
सेटा होची 2.16. So when iodine gains one electron, it becomes I minus. I minus रे हमें देखो चे ionic radius is much bigger than iodine. So this is also true in any combination. So remember that any atom if converted to a cation, तार radius टा decrease कर जिवो. If an atom is converted to anion, तार radius टा increase कर जिवो. So ये logic रे हमें ये भलिया comparison सब कोई परिबा. We can say radius of Cl minus is bigger than radius of chlorine, or radius of K plus is less than radius of K, neutral K. Hydrogen is one element which can have H minus, neutral hydrogen and also H plus. तो जदि ए तीनटार radius हमें compare करिबा, radius of H plus would be less than radius of H and radius of H would be less than radius of H minus. तो ये जो पैटर्न टा हमें डिस्कस करूचे यार गोटे भी एक्सेप्शन नहीं. So remember clearly, whenever an atom is converted to a cation, its radius decreases. When it is converted to an anion, its radius increases. Now there is one last concept we need to see. Sometimes you will be asked to compare the radius of isoelectronic ions or isoelectronic atoms. Isoelectronic माने कौन? If two atoms or ions have same number of electrons, then they are called isoelectronic. This is the definition. तो जोठी हमती देखिलो isoelectronic atom रो radius comparison पचारुची, you just compare the nuclear charge of those two atoms or ions. जेमती मु गोटे example दउची देखो. Suppose करा हमें नेले sodium. Sodium has 11 electrons. अब ता सहित आ गोटे आयन मु नउची लेट अस से मैग्नीशियम रो +1 Mg plus आयन. तो मैग्नीशियम रो एटॉमिक नंबर हला 12. सेथुरु गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव हे गला माने Mg plus also has 11 electrons. So if we have to compare the radius of these two, ताले हमें केमती करिबा. Now both of them have same number of electron. तो एठी मु देखिबी एटॉमिक नंबर कहार केते अछि. तो सोडियम रो एटॉमिक नंबर हला 11. Magnesium ra atomic number होची 12. Now since with the same number of electron, magnesium has a higher atomic number, ता माने magnesium रा nucleus रा charge टा higher. तो logic टा कौन देखो, since they have same number of electron, both of them have outermost shell same as each other. हला एटा तमरा nucleus रहिला, एटा धरा outermost shell. तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन की आउटरमोस्ट शेल, वैलेंस शेल इज सेम इन बोथ ऑफ देम. तो जहार न्यूक्लियस रो चार्ज टा बड़ हो जिवो, सी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को बेसी अट्रैक्ट करिवो. सो द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शुड बी पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस. तो शेल टा टिके पाखु को आसी गले एटम रो साइज टा कमी जिवो. सो इट इंडिकेट्स दैट अ बिगर Z implies smaller R. तो जहार Z जिते हाई हबो से अनुसार तार रेडियस टा कम हबो. तो सही लॉजिक रे मुएले कहि परबी, सिंस मैग्नीशियम प्लस हैज अ हायर Z वैल्यू, तो रेडियस ऑफ Mg प्लस वुड बी लेस, स्मॉलर than radius of Na. So this is how we can very easily compare the radius or the size of isoelectronic atoms or ions. तो एठी कन्वीनियंस पई कोन करा जाए, जो तुमको धर एमती दीटा रैंडम आयन कोन दिया हेची, तो दीटा रैंडम आयन ने जदि साइज कंपैरिजन करिवार अछि, यू कंपेयर द Z by E value of these two ions. तो Z by E माने कोन, Z तो जानिछ एटॉमिक नंबर, E एठी होची नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जेमती एठी मोर मैग्नीशियम रो Mg प्लस जोटा नैथिले, तार Z by E is equal to 12 by 11. Simply for sodium, Z by E would be 11 by 11. तो after you determine Z by E, तमेले देखो कहार Z by E टा हाई अछि. जहार Z by E हाई थिबो, तार रेडियस टा स्मॉल थिबो. So instead of comparing Z, we can actually compare Z by E. तो रूल टा को एई भलिया हमें मन रखिले सुविधा हुए. तो दीटा जदि रैंडम आयन एमती दिया जाइछि, तार रेडियस कंपैरिजन पचारुछि,
तो instead of comparing only the Z value, you compare Z by E. तो सेठी जदि isoelectronic atom अछि ताहले directly Z comparison रे हेजिबो. But even if two atoms are not isoelectronic, still तमे Z by E rule रे जदि करिवो, you can very easily compare the radius. So as you can see here, magnesium ro Z by E टा 12 by 11 and sodium ro 11 by 11. तो 12 by 11 is clearly bigger than 11 by 11. सेटा हमें जानी पड़छो fractions को देखिकी. And because of this higher value of Z by E, radius of magnesium is smaller. So this is how Z by E can be the basis for comparison of radius of atoms or ions.